Assalamu alaikum everyone, once again. Sadia Gondal here from Javed Publishers. Today we will be continuing with Kids English Grade 5, chapter number 10, and the topic is cleanliness is half of the faith, and we will be doing the grammar portion today. And the first rule we would be learning about today is noun, pronoun, agreement. इसकी हम दो टाइप सीखेंगे, agreement in gender एंड एग्रीमेंट इन नंबर. जेंडर का मतलब है मैस्कुलिन, फेमिनिन या फिर न्यूट्रल. हम सबको पता है कि जब हम एक फ़ीमेल जेंडर यूज़ करते हैं तो उसके साथ फ़ीमेल प्रोनाउन ही यूज़ होगा. मेल नाउन यूज़ करते हैं तो मेल प्रोनाउन यूज़ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी. और मेल नाउन यूज़ करेंगे तो मेल प्रोनाउन होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ही. और अगर फीमेल नाउन यूज़ करेंगे तो फीमेल प्रोनाउन यूज़ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल शी. इसी तरह से जब हम सिंगल नाउन यूज़ करेंगे तो हम इसके साथ यूज़ करेंगे सिंगल प्रोनाउन. और अगर हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे तो उसके साथ यूज़ करेंगे प्लूरल प्रोनाउन. जैसा कि अ बेबी इज़ प्लेइंग विद हिज टॉय. यहाँ पे अ बेबी इज़ सिंगल नाउन और हमने साथ में यूज़ किया इज़, जो कि शो कर रहा है हम सिंगल नाउन की बात कर रहे हैं. एंड बी इज़ द चिल्ड्रन आर रीडिंग देयर बुक्स. चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल नाउन है और हमने इसके साथ यूज़ किया प्लूरल प्रोनाउन, दैट इज़ आर. Okay, so the next question you have to do is write a paragraph on when I get sick by keeping in mind the rules of noun, pronoun, agreement. So let's write this paragraph. When I get sick, I go to the doctor. The doctor tells me to take bed rest and to eat healthy food. My parents take care of me when I am ill. My mother makes soup for me and my father gives me medicine. I feel bored when I get sick. We should always practice healthy habits like washing our hands before eating anything and taking shower daily. ग्रामर पोर्शन में नेक्स्ट आपको जो रूल बताया गया है दैट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में करेंगे. दैट इज़ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो कि आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर द वंस इन विच यू क्वेश्चन समबडी. इसकी एग्जाम्पल्स आपके पास गिवन है. एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे यूज़ करेंगे, यू आर गोइंग टू यूज़ ईट, स्लीप. और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप नॉट का यूज़ करेंगे. और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप यू वुड से डज शी डू दैट, और डू आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैज़ ही डन दैट. ओके, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यू हैव बीन आस्क्ड टू डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आप सब्जेक्ट को उसके वर्ब के नंबर के साथ एग्री करवाएंगे. उसके जितना नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उतना ही नंबर ऑफ वर्ब आप शो करेंगे. सो लेट्स डू दिस. नंबर 1 इज आमना एंड हर कजन्स इज और आर एट पार्क. यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है आमना एंड हर कज़न्स, जिसका मतलब ये हुआ कि आमना भी है और कज़न्स भी हैं. सो यू आर गोइंग टू से आर. नंबर 2, ईदर माई मदर और माई फादर इज़ आर कमिंग टू अटेंड द मीटिंग. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ईदर माई मदर और फादर. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई एक मीटिंग अटेंड करेगा. तो जब कोई एक अटेंड करेगा तो यू आर गोइंग टू यूज़ द वर्ब इज़. सी इज़ दे doesn't और don't know the answer. यहाँ पे आप यूज़ करेंगे don't know the answer, क्योंकि आपके पास ये जो don't है this is the single form of verb. C is they doesn't और they don't know the answer. यहाँ पे they आपके पास plural noun है और इसके साथ plural verb यूज़ करेंगे हम. तो यहाँ पे do not is your plural verb. Last is one of my sisters is or are delivering a speech. यहाँ पे आप चूज़ करेंगे is, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है one of the sisters. जब one यहाँ पे आ गया तो फिर आप is यूज़ करेंगे. Okay, the last section is writing skills, in which you are being asked to write the topic how to keep yourself clean.
and you have been told to use linking words. So let's write this topic. How do you keep yourself clean? If we will not practice cleanliness, then we can fall ill very easily. There are many ways to keep ourselves clean. Always wash your hands before eating anything or after going to the washroom. Make sure you maintain cleanliness around yourself by not littering on the streets or in your rooms. Also, take a shower every day after coming home from school. Most importantly, change your clothes every day and wear new clothes. And lastly, pare your nails and trim your hair to keep yourself clean and presentable. Dear teachers, this topic was asked to you. Why? Because they want students to know about expository paragraph. Expository paragraph में आप किसी भी चीज़ की details या फिर information या फिर directions show करते हैं. तो अभी मैंने जो paragraph आपके सामने read किया उसमें बहुत clearly I told you that how and in what manner and in what methods you can keep yourself clean. Page number 72 पे the next grammar portion is of question words जिसमें आपके पास there are 6 question words. Who, where, when, why, what, which. लेकिन उनके different functions हैं. You use who for people, you use where for place, you use when for time, you use why for a reason, you use what for information, and you use which for a choice. आपसे कहा गया है make questions using these given question words in your notebook. First question word है आपके पास when. The sentence is when will you finish the work? Next is which. The sentence is which book do you like to read? Next word is why. The sentence is why are you making a noise? Next word is who. The sentence is who shall pick you up from school? And the last question word is how often. And the sentence is how often do you watch movies? इसका part number 4 है complete the given paragraph with the help of given words. So let's fill them up. Medicines are used for the treatment of diseases and improve our health. When we fall ill, we take medicines. They are drugs which doctors prescribe to the patients. Whenever we get ill, we should take medicines with the consultation of a doctor. It is important to keep medicines away from the reach of children. Page number 72 pe, the last question is an activity which is about open-ended questions. Open-ended questions are those questions in which we ask the students to think freely. हम उनकी सोच पे कोई limitation नहीं लगा सकते. वो जितना इस चीज़ को डिटेल में सोचेंगे और जितना पर्सनल ओपिनियन देंगे उसको हम कहेंगे open-ended questions. आपसे कहा गया है read the given text and write how can we keep ourselves safe from germs. Germs are microscopic organisms in the world around us. We cannot see them, but they can make us sick. Keeping our hands and body clean helps us to get rid of the dirt and germs. Germs can get into our bodies from the air, from our clothes, and from the things we touch. Keep the germs away by washing your hands frequently. Frequently means many times. And maintain cleanliness around yourself. Cover your nose when you sneeze. Try to stay at home if you have a cough or flu. अब से कहा गया है कि read the passage and write how can we keep ourselves safe from germs. So the answer is in the last 3 lines. The answer would start from here. Wash your hands frequently, maintain cleanliness, cover your nose when you sneeze, and try to stay at home if you have a cough or flu. Dear teacher, this brings us to the end of this chapter. आप अपने students को इस chapter के end में आप उनसे ये question ज़रूर कर सकते हैं कि वो आपको बताएं कि वो हाथ कैसे धोते हैं, कितने times धोते हैं और कब कब धोते हैं. इसके अलावा अगेन हमारे पास बहुत सारे उसूल हैं सफाई के जिसके बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सफाई सिर्फ एक पर्सनल सफाई नहीं होती है, आपके आसपास भी जितनी भी चीज़ें हैं आपने उनको साफ़ रखना है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका रूम, आपका क्लासरूम, आपका स्कूल, एंड देन कम्स द कंट्री. सो ऑन दैट मैसेज वी वुड साइन ऑफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.